there are things that I had to be taught, and I learned. Uh, for things to go very smoothly, we were planning on going live, but obviously I don't know. I took the help of PrepBee team, so yeah, I have some issue with my earphones, so your voice is thoda sa a little low. All right, welcome to today's session on CV building and personal branding. So this is a very special thing that has PrepBee has started, and they invited me to take one of these sessions. They said ki, it's for people who want to do well, get better, and prepare themselves for their upcoming B school journey. Sort of, would you be interested? And I said, yeah, definitely. Like helping out people, making sure that they have access to free resources or resources that will help them do well. I definitely like to be a part of it. So once again, welcome to today's session. And basically, today I'm going to talk about how to make a good CV that will help you, you know, get shortlist or getting placed in XYZ companies. And a little bit about personal branding. How should you go about personal branding? Because some HRs that might be coming to your B schools, they may look at that as well. So, but before that, I'll give my introduction. So, I am Saurav. I am an HR professional currently working as an management associate, and I have been engaged with PrepBee for a long time. But once since I again started working full time, I have left and joined them only in a very limited capacity. Whenever they need some sessions, uh, which is free and which helps me connect with young audience to try and help them out. Okay, that is where I step in, and it is something that I love. That is why I do it. Okay, because working full time and then coming back, it takes a lot of energy, right? Especially since I live in Mumbai, so it takes a lot of energy for me. But this, I think this brings back the energy levels for me. That's why I do it. So yeah, I'm very happy to engage with these bunch of guys who are doing a tremendous job. And some of you might be aware of Ayush, Sumit, and all these boys. So yeah. So that is the brief about me. And yeah, let's get started right away. If you have any questions, feel free to write. Um, I'll be happy to take all the questions towards the end. If I am not, then probably I think Apurv or people in the meet will be able to help you connect, take to mentors, even to me as well. I'll give you my contact. See, because I feel making connections, that is how we all make connections. I also make connections and you guys also make connections. So yeah, this is some of the things that PrepBee works. Okay. They have launched, I think, a free 2 week premium MBA bootcamp to help you start your MBA journey at a rapid pace and in the right direction, because that is very important. Okay. And that is a very good initiative by PrepBee. I mean, in the content that they're going to deliver, I am sure nobody else is going to deliver, especially being open source and easy accessible. Yeah. So today's agenda is to understand the process of SIP, your summer internship placements, because most of you who are in this meet will be joining, right? Your B school or already have joined. So you'll be going through this process in the coming few months. So I'll tell you the process beforehand, and then I will also talk about why do we need a CV. Okay, I'll show you a sample CV. What all things he could have done right, and then I'll also show you a CV which has some of the basic elements and is a better made CV. Towards the end, again, we'll have a Q&A. What is out of scope for today's session is me showing you a dashboard of a recruiter. So I didn't want to limit the learnings of today's session to your 2 years of MBA and post final placements, summer placements. I wanted to take it beyond that. Beyond that, once you enter an organization and you start moving to other organizations, ठीक है,
what the process is like. So we use different platforms for that process as well, which we call as job portals. मुझे पता है कि most of you, I mean all of you would have heard about job portals such as Naukri, maybe Hirist, maybe IIM Jobs. So I, in the past, have worked as a recruiter. So I had access to those job portals from the perspective of a recruiter. So sometimes I was able to show you from that perspective. I would log into my job portal, recruiter login, and then show you what we see. When you submit a CV, your CV is not the first thing that we see as a recruiter. The things other than your CV that we see. Okay, so what those other things are, okay? So I would not be able to do that. That is out of scope. We don't have access to job portals in this session. But yeah, again, if PrepBee plans to bring me back to help you guys again and make that part as well, then probably yeah, we'll do that. Straight away, I'll now start. So this is the timeline. You guys are right now in June. You have joined your B school. In July, you will receive a communication, most likely in July, from your official placement committee, placement cell, placement club, placement group, whatever it is called in your B school. You'll get an official communication that please start making a CV. This is the format of our B school that we follow, and these are the things that you need as proofs for your CV. So that communication comes in around in July. I think pretty early, right, for you guys. Abhi to you would have entered. Not even 1 month. Things already have picked up pace. Less sleep, and then this communication hits, and it's very real. In August, they'll tell you ki the verification will start in August. They'll start verifying proofs, pointers where you don't have proofs. They'll remove it. Okay, they may give you sometimes, let's say a week or two to get those proofs verified, whatever verification is required. So verification is typically August is the season where verification takes place. In September, early September, I think mostly your CVs will be frozen. So what you will be actually registered on a platform that helps in conducting campus placement. For us, we I think use Superset. Most campuses use Superset, but there are other softwares as well. So any software that your B school is using, they'll use it, and then they'll upload your CVs and freeze that CV. No more changes possible. Okay. And after the CVs are frozen, companies start coming on portal. So that uh, login ID you'll be getting, okay, your CVs will be uploaded, it will be frozen. On that portal itself, companies will now start coming and you can apply to them. Okay, I don't know if I'll be able to show you. Maybe I can, if again PrepBee organizes something, then probably we can do, I can bring in some snippets, some snapshots from my experience of using Superset and show it to you guys. But again, that's for some other time. Once you start applying, then you will receive as per the company's criteria. Some companies give you test links, some company will simply give you a shortlist. So basis that you'll start receiving shortlists and test links which you'll have to take, and so on and so forth. Different processes for different companies. Some have exams followed by shortlist, followed by GD, on campus GD in groups, followed by a round 1 interview and a round 2 interview and a round 3 interview. So these are the 3 rounds of interviews, or maybe 2 rounds of interview. I think mostly 2 rounds of interviews are a must in summers or in finals. Sometimes only one round of interview also does the job, but yeah, that's about it. In October, most campuses have peak of summers. ठीक है, maximum number of companies coming on campus, good companies coming on campus. ठीक है, and you'll have GDs, interviews galore. Every day you'll have maybe 2 or 3 placement processes. ठीक है, and by the time November comes, things sort of take a backseat, things slow down, and towards the December things start to fizzle out. Companies अब थोड़े rarity में आएंगे. Week में you'll be having 2 companies, 1, 2, 3 companies. That sort of number. ठीक है. So this is the timeline. Any questions up till now? किसी कुछ पूछना है तो you guys can keep typing the chat box. I have
the chat box open. So if it's something that I can take now, I'll take. Otherwise, I'll move it towards the end of the session. Okay. Now, since so many of you have joined, okay, is it that important making a CV? Is it? Is it that important? Like, guys, tell me in the chat box. Is it important to make a CV? Why is it important? Why are you guys so here in such huge numbers? Hmm. CVs are your first impression. How to present yourselves, it defines us. It is a presentation of a candidate. Okay, okay, okay. CV tell what you are, ATS. I am getting responses which are, I think, all are correct. Yeah, a representation of who you are. That's true. That's true. So it's a document that is needed because the person coming in to hire, not only now, but the person hiring you 4 or 5 years down the line may not be aware of your work ethic, your work experience, right? He may not have all the information about you. What's the best way to give that information? The answer to that question is CV. For now, we don't have anything else. Things are coming up. You have video introduction. Okay, all those things are coming up. But still, they have not yet replaced resume, your CVs. They're still the best piece of document, okay, to convey that, to convey your story, your experience, your skill set. Okay, so it's basically a document who tells the HR who you are, your skills and your achievements. Okay, what have you done? And it is again used to market, especially in B school where there's a lot of competition. Okay, all of you would have same cognitive skills because you have cleared the CAT or ZAT or SNAP or NMAT or whatever exams you have cleared. Okay, so you may be at a same cognitive level. What is the differentiator? CV will help make that differentiation. Okay, and we recruiters have a very tough time shortlisting 10 candidates from 200 applicants. So I think CV helps us in that job. Now technology has come in. We use AI screening tools, okay, wherein I'll add some keywords in my ATS portal, okay, that I use to source CVs, and basis some of those filters, I'll get a shortlist of maybe 20 CVs out of 200, and it doesn't even take me a minute. It happens so fast. Okay, so that is why it's important to make a CV which will get you shortlist for the right roles that you are looking for. Okay, we'll get into that. Nowadays, as I said, AI screening is has taken quite a bit of space. Okay, manual screening is still happening, but again, it's very laborious, takes time, takes a lot of effort. And why not do something in a way which is very easy, very fast, and probably also accurate? We can always debate, but yeah, it is time saving, hence cost saving. So it is picking pace. This is from my experience as a recruiter, from what I hear from my friends as well as to what platforms they have planned to have. So this is something that more or less some companies have already implemented. Most companies are thinking of how do you go about implementing that. Okay, what is the best ways, best practices, and in some process trying to explore this. Very few companies who have not yet touched. Okay. So for the screening to work, for you to get a shortlist, it's very important that you have keywords. Keywords are very are those words which the AI will say ki, boss, this is the right candidate. Basis whatever I have entered, ठीक है, details, experience or skill set, ठीक है, it will look for some similar words which we are calling keywords because they are very key. So AI picks those keywords, and basis that you get a shortlist. And yeah, in total it says ki why should we hire you.
So this is basically a rough idea of a CV, how things are arranged. So from the CV that I had from my experience, we used to have our academics right there up top. It starts in reverse chronology. So your latest one comes first, followed by your undergrad, or if you have masters, and then 12th and 10th. So yeah, that's the usual sequence. Now again, in terms of marks, you'll see ki this guy has percentages up to two decimals. Okay, in 10th and 12th, if you see this kind of consistency is really important. You want to have uh, all the information in the correct order and format. You don't want to change formats too much. Otherwise, what will happen is AI will get confused. Okay. So instead of him having, let's say, his 12th percentage in 87.23, just taking random examples, and 10th has 85.1, and the second decimal places is missing, right? So that should not happen. Uniformity is something that you should definitely try and maintain. After academics, we have after academics we have academic achievements. So he has achieved some scholarship, which is mentioned, and some XYZ performance, and then followed by certifications and publications, right? So, and then his professional experience. So this is the usual format that we followed. In professional experiences, you mention your company's name, and then you have roles and responsibilities. So these pointers are very important. ठीक है, if you look at below academic achievements, I have written secured a merit scholarship. ठीक है, these lines in in line में से ना what AI will try and see कि क्या कोई keyword है. ठीक है, is his skill set matching with my requirement? So it's very important that you spend enough time on developing these pointers. Can anybody tell me ki what do you think of the pointers that this guy has mentioned? You are seeing his pointers now in professional experience. What is your opinion? Is it good? Is it bad? What's missing? What's your first experience once you are have seen this? ठीक है, eyeballing it for the first time, I understand, but what's your feeling? What's your experience? क्या लगता है? Good, bad, ugly, या फिर okay, okay, average? Right? Tell me in the chat box quickly. Not showing impact of work. Okay, okay. Oh, numbers. Yeah, some of you, I mean, you guys are pretty bright. Immediately captured ki numbers are not quantified. Yeah, that's true. Data is missing. Yeah, action is missing. KPIs, yeah, KPIs नहीं बताया इसने. What was his performance indicators? He should have mentioned results. Yeah, results. Absolutely. Results, quantifiers. बिल्कुल. Yes. You guys are absolutely bang on correct. So missing है, वो impact missing है. As a recruiter या फिर even in, let's say, ATS, they read language. Now they have become so smart that they read language and they'll say कि impact's not quantified. So this is a poor quality of pointers, right? General things are mentioned. Yeah, ऐसा लग रहा है कि it's chat GPT. AI will say, something my brother has worked on. That kind of pointers he has made. Not good, right? And then he has done a lot of internships, which are again the second most important thing in your CV after your work ex is internships. Because acads you cannot change, right? Internships and life projects you can change. It's very important to have relevant internships and life projects because you may not have a relevant experience. Okay, so this is what brings relevance. This guy has probably worked as a marketing intern in some place, conducted market research. Okay. Okay, here at least he has mentioned कि he has done market research. So what he has done, he has mentioned. But again, the numbers are missing. Yeah, impact. What impact? He did market research. What was the impact of the market research? Did he achieve something? He did. What was the impact of that? Evaluated DPR, whatever the evaluation was. What was the impact? Not quantified. वो broad responsibilities कितनी बड़ी थी? I was not able to get a feel of it.
Then comes position of responsibilities. Basically ये यहाँ से from here on ना, these are things which are apart from your professional activities में, in professional capacity whatever you have achieved, this section is beyond that. Extracurriculars start from here. ठीक है. Your leadership roles, have you handled leadership? What do you like to do in your free time? What other passions you follow? ठीक है. There's only one section that is here which is still connected to professionals, which is technical skills, which is nothing but certifications that you pursue. Maybe you use Udemy, LinkedIn, Coursera. uh, there are a ton of other websites, I think. ठीक है. You may even be aware of more websites than I am. edX probably is one of them. So Simply Learn is also probably one of them. And I think PrepBee also has certifications. So their certifications are small, I mean, for short duration and very accurate. So yeah, you can find things. Coursera has longer certifications. It takes a lot of time to complete. ठीक है. So what should you do? मतलब इतना सारा चीज मैंने बता दिया कि ये सब करना चाहिए. What should you do? One thing तो I have already told you the answer. Academics cannot change. Cannot go back to your undergrad and retake those exams, can you? Even if given a chance, I don't think anybody sitting here would like to take his first year exams again. Nobody, right? So academics we cannot change, right? WorkX, can you change WorkX? Right now you're about to join your B school or already have joined. Can you change your WorkX? No, right? You cannot change your WorkX. So that is also something that is logged. Achievements and certifications. Now some people may be able to add or improve something in certification. Maybe you can, if you are planning to take finance, maybe you can go for some CFA level 1 or level 2 depending on where you are. ठीक है. Maybe CA is difficult with MBA. So but CFA, yeah, people do CFA. So maybe those certificates. Maybe if you are from ops, maybe you would like to do KPMG, Lean Six Sigma by KPMG, right? Maybe that is something that you can do. ठीक है. But again, I'll tell you guys कि there is one catch about certifications, especially these ones which are very very important, industry recognized. It's very important to do some projects to ensure कि you are able to explain the concepts and their applications. ठीक है. In terms of pure extracurriculars, you all have or will get plenty of chance on campus as well. ठीक है, to build that. If you have already done quite a lot, then probably you don't need that much. But yeah, you will have opportunities once you go on campus. You will be able to join cells, clubs, committees. ठीक है. In your final placement, you would have already had a year or year and a half of a chance to work on your extracurriculars. You may be participating in case comms, or you may be participating in uh, or writing research papers, publishing papers. ठीक है. तो that, or maybe if you have any sport that you want to follow, uh, you want to participate in marathons, you can do all those things. Okay. Now comes the very important thing which everybody who is right now in the meet will be able to do, which is life projects and internships. You will get time to do projects before internship. Yes, you will. And you should do if you have not already started. Start anywhere. ठीक है. Make sure you get quality work. That's all that matters. ठीक है. If you, even if you have need to work full time, work full time. See, I know Internshala is good platform to find live projects. PrepBee I think also has live projects. You can connect with some admin. I think you can connect with Sumit. ठीक है. He'll tell you. And Apurv, I think these guys will have much more information about that. You can use Unstop. ठीक है. If you have personal connections, please use that to find projects, because it's very important after your WorkX. That is the next biggest thing that I look at. When I say I as an recruiter, or in my interactions with other HRs, that's what they look at, because everything else is something that you have learned.
There are only two places where you apply what you have learned. WorkX, because that is full time and that is a different job altogether, or internships or life projects. What you have learned, you apply that. And trust me, it takes a whole hell lot of effort to transition from learning to application. There is a big jump that you have to do. So life projects are of utmost importance. I have told everyone who has interacted with me ki bhai start doing it. As soon as your interviews were over, I said ki do it, start doing it, find it, do it for free, doesn't matter. At least get that experience and exposure in the field that you aim to pursue. Because as I said, you looked at the timeline, right? Time nahi hai boss. July mein you'll get that information ki start building your CVs. And what happens in that, I forgot to tell you. So in my B school, we make different CVs for different specializations. And as a person who joins MBA core, ठीक है, people who join in MBA core or PGP program, they make 4 different CVs or whatever number of CVs that are required in your campus. Different CVs. So marketing CV one you'll make, ops, finance, ऐसे करके you make different CVs. And whatever company comes, ठीक है, for a particular role, let's say finance, you apply using a finance CV. Boss, in July, you'll start making those CVs. And right now in June, you are thinking, yeah, I'll get some time to figure out which specialization I want to do. I'm sorry, but that's not how it works. Okay, by August, your CVs might be frozen. Most of you will have your CVs frozen. Cannot bring any changes. You would have already prepared your ops CV, finance CV, strategy CV, marketing CV. So, I mean, what do you do? So that is the scramble that you'll have to go through. Still, I think once you get into the B school, it will be hectic, but still, at least you'll have some quality. If you can do some live projects or internships, figure out with your participating company or whatever who is providing you. The average duration for a internship or project that should be there for it to go on your CV is around 1 month, 28 days. That is the minimum duration that I am aware of. Some old IIMs require you to have it up till I think 60 days, if I am not mistaken. Okay, don't quote me on that. I'll have to check. But it sort of varies in that ballpark. मिनिमम 1 मंथ, उससे उससे कम में यू वोंट, आई मीन क्या क्या ही सीखोगे यार. 1 वीक तो तुमको बताने में लगा देंगे कि क्या करना है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, हाउ यू अप्रोच इट, व्हाट इज द रिसोर्सेज दैट विल बी ऑफर्ड, एंड देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. ठीक है. टेक्निकल स्किल्स जो तुमने somebody said कि हाउ मच वैल्यू डज सर्टिफिकेशन ऐड. If you do some projects after certification, it does add value. For example, data analytics. I did certification data analytics and then I also did projects. So I had a sense of understanding ki what do you do, how do I approach a data. Data को सबसे पहले when you are learning, तो you don't know ना कि how much time data cleaning takes. It takes a hell lot of time. The maximum amount of time that you spend in data analysis is on data cleaning. कोई negative values, मतलब कोई empty boxes तो नहीं है. ठीक है, कोई ऐसा नंबर तो नहीं है विच इज डज नॉट मेक एनी सेंस. जो है उसको कैसे भी अप्रोक्सीमेट एंड फाइंड अ वैल्यू दैट वी कैन हैव देयर. ठीक है, विच वुडंट स्क्यू माय एनालिसिस. एनालिसिस तो यू स्टार्ट डूइंग इट, है ना. यू डू कोरिलेशन, यू डू a statistical summary. ठीक है, and you run a bunch of ANOVAs and all that and then make graphs. It happens and then you get the interpretations. ठीक है. आज तो today तो ChatGPT will also help you analyze. ठीक है. So data collection, again data collection, before even data cleaning, data collection happens. How do you go about collecting data, finding those people who will give you the right information, preparing that questionnaire instrument. ठीक है, instrument of data collection which we call question. It may be in form of a communication uh, questionnaire, sorry, or whatever you're comfortable, whatever instrument you want to use. So वहां से वो स्टार्ट होता है. तो इफ यू डू सम एप्लीकेशन ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स, इट मैटर्स. अदरवाइज दे लास्ट यू व्हाट यू लर्न, यही सब.
इसीलिए I said कि work ex and internships are very important, because these are things that really shows कि whatever you have learned you have applied. ठीक है, application is something that is seen. तो प्रायोरिटी शुड बी इंटर्नशिप्स. ठीक है, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स करो. इंटर्नशिप्स फुल टाइम करो तो उसका ज़्यादा वेटेज होगा, बिकॉज अगेन दैट इज ऑलमोस्ट एज क्लोज एज टू वर्क, विच you won't be able to do now because you are about to enter, join a B school. So you will be able to do projects, corporate projects, academic projects. ठीक है, corporate projects again I'll rate them slightly a little higher because there's some level of work that is expected, some level of outcome that is expected from a corporate project. Academic project may be just for learning, उसके end में उतना कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पाया, बट कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स में प्रोडक्टिव ही चाहिए. उनको कुछ एक प्रॉब्लम है विच विल बी हेल्पिंग देम सॉल्व. ठीक है, or maybe they are working on something and they need your help. They are implementing some sort of a ATS, they need your help. You do, you find whatever errors they are getting, ठीक है, and whatever communication that needs to happen, whatever help they need, they'll tell you and then you do. So internships highest priority, corporate projects again takes the second, and academic followed by academic projects, then it's technical skills and certifications. But again, try and see how much you can do. Again, CV में क्या missing था in that CV? Quickly telling you keywords missing थे. If you go back, I'll go back. Let's look at first bracket of keywords. Power verbs. Power verbs are basically, it's a list that you get from Harvard. We also, every campus gets. Okay, in my interaction, I have interacted. Every campus gets a list of a PDF that has all the power verbs. Okay, which you should use to start your sentences of pointers. Now, brands, companies that you have worked with, that adds to your credibility. Action, what action did you take? Okay, and quantifiers, connect with that, connected to that action is something that is desirable. Skill sets, what skill sets you had. Numbers are very important. Quantifiers, as I said, amount in terms of, let's say I worked on a project of 2 CR. ठीक है, I handled a budget creating a budget of इतना इतना CR. ठीक है, तो amount, quantity. It can be also be metric. Somebody spoke कि KPIs were missing in that CV, right? So you can have KPIs. Let's say you're doing uh, since I'm HR, let's take attrition analysis. So I said कि attrition was something that we observed कि इतना था in the starting of my project. I did some interventions to lower the attrition. I'm just taking an example. It may be very difficult for you guys to do that some sort of work in that department in 2 months, but I'm just taking for an example. So you say कि I lowered the attrition by 20%. So what is attrition? It measures something, right? It's a metric. So you are defining your actionable items using a metric. That is again something that is very desirable. It's very, very desirable. Metrics are actually much more, I think, better in my personal opinion as compared to quantity or amount, but not it's not apple to oranges. It's closer, but again, metric is something that I personally feel ki it adds more value. So how much is too much? I think 1 page is too much. If you are not able to communicate to me, ठीक है, what your strengths are and what you are bringing in 1 page, you won't be able to do in 2 pages. ठीक है. So let me go here. ठीक है, एक बार फिर से. तो if you see here, this guy responsible. It's not a power verb. Coordinated, yeah, maybe it's an power verb. An action word. ठीक है. He said he did something. Responsible is not an action verb. Coordinated is. If you look at the next slide, he said conducted. Again, this is a power verb. Helped. This is also a power verb. Evaluated. Again, this is also power verb. So action verbs we call power verbs, right? So it's very important to begin with that, especially with the onset of AI screening and all that. Now comes a very, very important aspect. That is the second part of our today's session, which is personal branding. Some companies will come, or before coming, they'll ask you for your LinkedIn ID, and they'll go through that. They'll see कि
what kind of uh, content you have, how many connections you have. So this is where I think you, and nowadays especially, it's very important to connect with people on a social platform where you are visible to others as well. ठीक है. And for us professionally, LinkedIn is our Tinder or whatever, our social media, Instagram. ठीक है. For professionals, that is, I mean, I wouldn't say Tinder, that wouldn't be a good comparison, but it's let's stick to it being a platform for us that enables us to connect with other individuals and understand what they are doing. ठीक है. What all journeys they have embarked on, what all achievements they have. So that is the platform for you to showcase. It's very important that you take care of that side as well. ठीक है. Because you all are joining such good B schools that the companies also take pride in having you guys on board for the talent and everything. So nowadays it's also expected that you will have some sort of a presence, uh, and you'll connect with people on social platforms such as LinkedIn to find resources, because it's a great platform to connect to your alums, because most of you will be joining very old B schools. Okay, will have at least 10-20 years of uh, programs that have been running for more than 10-20 years. Okay, and so how do you connect with alums? You cannot meet them everyone in person. Okay, neither they're going to visit your campus, each one of them. So, and obviously sometime in future you will need help, because that is what MBA is for. It's for networking and making connections. So for that, it is very important that you are available, you update your profile, okay, and you reach out to alums. Not only when you need help, reach them out, make connections and tell them, yeah, you are pursuing this, okay. That is something that you need to do. I think I have already said some of you will be required to make all CVs. In some B schools, I think they say you can only make 3 CVs. You choose whatever CVs you want to make. Some say yeah, you have to make all the CVs. ठीक है. And some say कि I think nobody says कि एक ही CV बनाओ, especially if you are in a core PGP program which may receive a lot of different roles. ठीक है. I'm not sure कि which B schools only have one CVs, because uh, that I don't know if that is something that you would go forward with, because people are not really sure कि marketing करना है. But I'll tell you something. My flatmate, he a very brilliant uh, guy. ठीक है. He wanted to do finance, but he got into a finance company and he had some sort of a finance experience. After summers, he came back and he said, "Boss, finance is not for me." So that was the realization. So, uh, and then he ultimately made a strategy, I think strategy CV, and then yeah. So from there he made a switch. I mean, it's not a switch per se, but it's maybe course correction you want to call it, or realignment, whatever word you want to use. So be ready to prepare. If you're going for a core program, PGP program, PGDM program, you may be required to make different CVs. Okay, obviously one will be your prime CV that is the area of your interest. Okay, now this is another example of a decently made CV. Okay, so this guy, if you see, he has written his pointers. One thing that I'll point from just the outlook is कि इसमें he has not uh, highlighted his keywords in the pointers. ठीक है. This is a mistake, I think. You should highlight, because as a recruiter यार जो आएगा ना, will come to your campus, he wouldn't have so much time to read all the information. So you need to make sure कि everything is succinct. ठीक है. And he has a easy time of finding those important criteria. For example, if you see here, he achieved 19 something plus installs, downloads. So this is something that he achieved. Should be highlighted, yeah. So because then the HR will be curious. The recruiter will be curious. How did you do that? Okay, what was it about? Handle customers, more than 1200 customers. Services to cater to more than 1200 customers. This is a quantifier, good quantifier. Because large number of customers he handled. How was the experience? What was he actually handling?
What did he do? So this is something that you should all be doing in your CVs. It should be highlighted. And I think he has used quantifiers, if I can see in the first 2 pointers of uh, under internships. If you look at founders, actually he was a founder in Booksbear. So if you look at the second pointer, he has highlighted some numbers in terms of downloads, and then in the third pointer he has highlighted in terms of customer service, customers catered to. Okay. If I look at his second experience, which was in Tata AIG, no numbers. Device, and I'll just use one pointer to tell you ki how you can add. People say ki it's very difficult for me to add a number, quantify to. Trust me, if you're writing 5, you'll have at least 2 wherein you can add numbers. It's just about you finding that. And if you have made a pointer जिसमें 5 you have made and all 5 cannot have pointers, trust me, you have made very bad pointers. ठीक है, take my word. If you cannot add numbers, 5 तुमने pointers बनाए हैं, and if you can't add numbers in any one of them, you have made bad pointers. Rework on them. Not spend enough time given a thought. I'll take 1 or 2 examples right now to tell you how you add numbers. So look at his devised and executed captivating job advertisements to allure potential candidates. Now, such a beautiful sentence. Okay, now if I'm reading, couldn't he have mentioned how many job advertisements for how many different roles, job roles did he handle? How many job portals did he reach? कितने कितने job portals पे he advertised? And couldn't he find any data saying कि पहले, क्योंकि see, Tata AIG has been running for a very long time now. They would have had a history of data कि इतने कैंडिडेट्स यूजुअली आते हैं, अप्लाइज थ्रू दिस पोर्टल. ठीक है, एंड उसका इम्पैक्ट ये होता है कि इतने 100 पीपल अप्लाई, 10 पीपल गेट शॉर्टलिस्ट, 8 interviews are conducted, 2 go to the final interview, 1 is selected. So this is the pipeline they would already have. If you did a better job advertisement, that is employer branding, if you did a good employer branding, in the first step only you will understand that there will be more number of potential candidates who will apply. 100 से 120 हो जाएगा. So there is a change in that metric. The increase in applicants, that is a metric, right? वो क्यों नहीं mentioned है यहाँ पे? Let's say कि उसमें change नहीं हुआ. Let's look at, मतलब उसने जो advertisements बनाए थे, maybe he wanted it to have some clear criteria highlighted, right? Clear criteria highlighted so that जो भी apply करे, those candidates are actually the ones who qualify for that. ठीक है, तो उस तरह से उसने जॉब एडवर्टीजमेंट को क्लैरिफाई किया. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 100 कैंडिडेट्स एंड ओनली 10 being selected, this time around only 50 applied, but out of those 50, 20 got shortlisted for round 1 interviews. Is this a change? Can I quantify this change in my pointer? Yes, absolutely I can. It takes effort for you to find that information. ठीक है, and put it in a way that fits in that sentence, ठीक है, and is in form of a number. So again, I gave you one example. You can take any pointer and trust me, this is where I'll tell you to use ChatGPT. It works like a charm. कोई pointer दो, उससे बताओ, do it in a proper way. तुम उसको बताओ कि I am, give it a right prompt. You say कि I am preparing my CV for my summer internship placements as an MBA HR intern or MBA marketing intern, ठीक है, in XYZ firm. या फिर फॉर्म नहीं पता तो बस उतना ही दो प्रॉम्प्ट एंड से कि these are the pointers that I have made. I was working on this project. थोड़ा डिस्क्राइब करो प्रोजेक्ट को एंड देन गिव इट अ प्रॉम्प्ट, अ टास्क कि क्या करना है चैट जीपीटी को. टेल इट कि I want you to quantify these pointers for me and give me different combinations of quantifiers for each of the lines. ChatGPT, trust me, if you give 5, for each pointer, it will give you 3 different methods that you can use. And this is the smart use of AI. Once you have that, you see कि do I need to club 2 pointers का matrices, ठीक है, or can I just simply pick one, rewrite
little bit, change it, and then add it to my CV. This is a smart use of Gen AI. And please do it. If you are not, you are falling ahead of the behind the curve. Because सामने अगर AI है तो उसको बीट करने के लिए you use your AI ना. Why aren't you using it? AI, वो भी AI जो है वो एक सर्टेन डेटा पे ट्रेंड है, ये भी एक सर्टेन डेटा पे ट्रेंड है. And there would be a pattern as to how they read information. So use it. Can you repeat the prompt you said? So I'll tell you. मैंने एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखा था, ठीक है. तो उसमें जैसे कि यू यूज पेट फॉर्मूला, पर्सनैलिटी, हु यू आर. आई एम एन MBA परसुइंग ये, मतलब आई वांट टू डू दिस. ई स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट, क्या करना तो तुम, यू विल टेल कि आई एम मेकिंग पॉइंटर्स, आई हैव वर्कड ऑन दिस, ठीक है. तो इट स्टैंड्स विद पर्सनैलिटी, यू डिस्क्राइब योर सेल्फ कि हु यू आर. मैं आई एम एन MBA स्टूडेंट, ठीक है, हु इज प्रिपेयरिंग माई CV फॉर समर इंटर्नशिप्स and I'm making some pointers. This is your first personality. Next is environment. You explain कि what are you giving, वो क्या है explain करना पड़ेगा ना उसको pointers. तो you sell कि these are my pointers that I have made for my CV. I have been working on such a such project. थोड़ा सा describe में उसको बताओ, keywords जो हैं तुम बताओ दो उसको कि ये मैंने काम किया है, this is all I worked on. So this is the environment. You'll explain the body. And then T is task. Tell it specifically what it needs to do. है ना, वो मतलब कहना क्या चाहते हो, वो मोमेंट है. तो उसको बताओ कि आई वॉन्ट यू टू गिव मी सजेशंस फॉर मेट्रिसेस फॉर ईच ऑफ दीज पॉइंटर्स. तो ब्रेक योर प्रॉम्प्ट्स इन 3 ब्रैकेट्स. सर देर इज नो नथिंग कॉल प्रॉम्प्ट लर्न. वैसे मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, वैसा कोई लर्न नहीं है. इट्स जस्ट कि यू यूज, ठीक है, एंड सम पीपल टेल यू कि दिस इज हाउ यू स्ट्रक्चर. बस एक बार ट्राई करना. एंड once you start getting good results, you'll start writing longer prompts. ठीक है, एक एक पेज के prompts लिखना स्टार्ट कर दोगे तो, एंड इट वर्क्स वंडर्स. एक और टिप मैं आपको दूंगा कि इफ यू आर स्टक, तो यू कैन आस्क चैट जीपीटी कि आस्क मी क्वेश्चंस so that my prompt becomes better. Or you can also ask chat gpt ki I want to create a prompt for doing this, ask me questions. तो वो चैट जीपीटी तुमसे क्वेश्चंस पूछेगा which you'll answer, and then it will create a prompt which you can again copy paste and use. So but it's like things are running on steroids, right? कुछ ऐसा है. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड यू गाइस टू नो फ्रॉम दिस सेशन कि आप कैसे एआई यूज कर सकते हो, ठीक है, एंड टू मेक योर सीवीज बेटर एंड बीट द एआई दैट इज सिटिंग राइट अक्रॉस यू, दैट द रिक्रूटर इज यूजिंग. एकेडमिक अचीवमेंट्स, यू मेंशनड वॉट एवर अचीवमेंट्स यू हैव, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता. को करिकुलर्स, अगेन आई विल से कि को करिकुलर्स जरूर हैव दैट इन योर सीवी, ठीक है. इट टेल्स बेसिकली कि हु यू आर एज अ पर्सन बारिंग वॉट एवर यू डू प्रोफेशनली, ठीक है. I have already taken a lot of time. So I think this brings me to the end of today's session. I hope you guys had a fair understanding of what to expect. Okay. And I'll now be open to taking any questions. Apurv, that is the format, right? We can take questions now. Okay. Yes, Saurav. Am I audible? Yes, yes, Mhm. you are audible. ये म्यूजिक कहाँ से बज रहा है? इज इट मी? अच्छा हाँ, सॉरी गाइस, सॉरी. I am, by the way, a music lover, so yeah, it helps you reduce your stress. Let me share my screen once again. ठीक है, and then I'll take the questions. ठीक है. Yeah. हम्म. किसी ने पूछा था, I'll go from bottom. Bottom नहीं, शुरू से ही करता हूँ, ठीक है. ठीक है, let me see. क्वेश्चन जो भी है आप पूछ सकते हो. कैन वी हैव देम, कैन वी लेट देम टर्न देयर ऑडियोज आल्सो? अपू, आई एम जस्ट आस्किंग, आई डोंट नो व्हाट्स द फॉर्मेट फॉर यू गाइस. आई एम जस्ट आस्किंग Uh, बिकॉज मे बी सुन सुन yes, के थक गए Ayush. होंगे मेरे को यार. Yes, 2 minutes I Ayush. am speaking, maybe they might be bored. And people who are not able to mark the attendance, just DM me on WhatsApp.
जो लोग क्लास में अभी है। ओके। ओके, सो आई आंसर पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट, सी different B schools will have different kind of tests. ठीक है, I'm sorry I did not bring one of the tests that I gave for Aditya Birla Capital. ठीक है, I think I hope it's fine. It's fine. I took the test. ठीक है, तो they have पर्सनालिटी टेस्ट. ठीक है, उनका कुछ कुछ स्किल या पर्सनालिटी या एटीट्यूड का कुछ टेस्ट होता है. इट्स बेसिकली अ बंच ऑफ वर्ड्स यू सेलेक्ट एंड देन द नेक्स्ट पेज यू फ्रॉम दैट लिस्ट यू अगेन सेलेक्ट लेसन नंबर ऑफ वर्ड्स. ठीक है, ऐसे करके होता है. सम टेस्ट आर लाइक योर कैट टेस्ट, मतलब लेवल थोड़ा कम होगा बट उस तरह के क्वांट्स होंगे, डीआईएलआर होगा, एप्टीट्यूड ये होगा तुम्हारा वीआरसी होगा. तो सम कंपनीज कंडक्ट दैट काइंड ऑफ अ टेस्ट. सम conduct some sort of gamified. For example, if I remember, PNG conducts gamified tests. ठीक है, उसमें you remember a few stuff, you play some game, try and identify patterns, ये सब. So different companies will have their own form of tests, and you will different they use different platforms. Some use muscle metal, some use unstop का. Especially if you're taking an aptitude test, तो mostly I think unstop companies use Unstop या Mosa Metal. Those who I think PNG uses some Workday software, ठीक है, to play games, and I think Capgemini also uses probably Workday. I'm not sure. ठीक है, don't quote me on that again. तो different tests. Some are like your cat. ठीक है, but again it's not difficult, and obviously you have your peers to help you, which I'm not supposed to say, but yeah, I did. What is the exactly process of verification? CV points का verification is very simple. They say कि you make your CV, you make your CV, you fill the in the format that they give you. They'll give you a format, and they'll say कि these are the accepted proofs. For example, for all the pointers, you have to get an email confirmation from the official domain of the company or college saying that this pointer is verified. Usually, it's only for internships, workx, and PURs. ठीक है, acads के तो तुम्हारे already you have mark sheets and all those documents, so you don't need email verification. For workx you need, for other things you need. For workx you also need your salary slips. Maybe sometimes they also ask for bank statement or PF statement, whatever is required as per the internal policy of the college. So these are the ways of verification. Pointers are usually verified over an email, so you will send the once you make your pointers, you will send an email to the respective organization saying कि I need verification, and then probably you'll call someone in the organization कि please यार approve कर दो, and then they'll reply saying that approved. So that email verification is required, as well as your supporting document saying that you did an internship here. If we have secured one SIP, we don't need to sit for others. Yes, so most B schools will have that key, one student, one offer. Once you have that offer, you are out in summers and in finals as well. Are they going to verify our internships volunteering? Yes, absolutely. Everything is verified in CV. Every word is verified. Trust me, if your words change from what is mentioned in the email that you sent, na, they won't allow you to change even one word. 20 अगर 3% लिखा है, 22 भी शायद अलाउ ना करे. कम तो क्यों ही करने देंगे, 24 तो करने ही देंगे, बिल्कुल ही नहीं, मतलब चांस ही नहीं है कि होगा. एवरीथिंग इज वेरीफाइड टू द एब्सोल्यूट डॉट. सीवीज आर फर्स्ट इंप्रेशन. अच्छा, यहाँ पे तुमने बताया कि सीवी क्या होता है. एब्सोल्युटली यू गाइस वर बैंग ऑन. एटीएस, एटीएस एप्लीकेंट ट्रैकिंग, किसी ने बता दिया, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है. बेसिकली रिक्रूटमेंट एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑल्सो. सो टू कंट्रोल दैट प्रोसेस वी हैव समथिंग कॉल एटीएस. इट्स अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि कितने लोग आए, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अप्लाइड, फिर क्या क्या स्टेप से होके अल्टीमेटली कितने लोग को मैंने ऑफर दिया. तो पूरा जो प्रोसेस है, जर्नी है ना, उसमें आई एम एबल टू सी कि क्या हो रहा है किस स्टेज पे. आई हैव लाइव अपडेट्स, ठीक है, एंड आई कैन यूज इट इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स टू यू नो इंडिविजुअली मैं मैनुअली सब कुछ करूं. उससे अच्छा है कि एक प्लेटफॉर्म में सब कुछ इंटीग्रेटेड होता है. या जॉब पोर्टल से सीवी सोर्सिंग जो है वो तुम इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी कंपनी के एटीएस में. सब कुछ इंटरनली हो जाता है, स्पेशली फॉर लार्ज फर्म्स जो कि मतलब उन कॉन्टिन्यूसली वो हायरिंग करते रहते हैं. जैसे तुम्हारा आईटी सेक्टर हो गया, तो जब वो लार्ज नंबर्स में हायरिंग कर रहे हैं तो मैनुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें करना
does not make any sense. So they use software to streamline processes. Can you suggest some ATS tools to present is better? ATS tools, यार ATS tools तो मैंने वही बोला कि you use pointers, ठीक है, there are some CV scores, but क्या होता है कि उसमें CV scores actually depend on the format of the CV which will be defined by your B school. तो अभी if you use that फ्री का जो आता है ना कि what is your ATS score online, वो तो मेरा वैलिड नहीं है अभी. what is important is having those keywords. एंड अच्छा हाँ, मैंने एक चीज बताना भूल गया आपको. कीवर्ड्स के लिए वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर, कि मैं आई वॉन्ट टू परस्यू इंटर्नशिप इन ब्रांड मैनेजमेंट, एआई को पूछो कि कीवर्ड्स क्या होंगे एंड सी की टॉप 5 कीवर्ड्स क्या हैं एंड क्या तुम उसको डाल रहे हो. उसको पूछो कि नॉट कीवर्ड्स ही मत पूछो, क्योंकि कीवर्ड्स होगा तो फिर वो हो सकता है. उसको पूछो स्किल सेट्स क्या क्या नीड रिक्वायर्ड है, ट्रेंडिंग स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, एंड सी की उसमें क्या क्या वो बता रहा है. एंड देन कोलैबोरेट, मतलब कोलैबोरेट एंड स्पीक टू योर फैकल्टीज, कोलैबोरेट, ठीक है, कि टू फाइंड कि क्या है वो 5 या 10 वर्ड्स जो कि होने चाहिए सीवी में मस्ट. तो यूज एआई इन दैट सेंस एज वेल. चैट जीपीटी को यूज करो यार, वर्क्स ब्यूटीफुली. अगर तुमने प्लस वर्जन लिया है विच आई थिंक कॉस्ट अराउंड 2000, शेयर करके ले लो, 2 बंदों में ले लो. 1000 रुपये यार, 1000 रुपये तो महीने का आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अफोर्ड. मुझे पता है कि तुम सब बहुत पैसे उड़ाने वाले हो बी स्कूल में जाने के बाद, ठीक है, तो डोंट टेल मी कि यू कैन नॉट अफोर्ड 1000 पर मंथ. ले लो, ठीक है, एंड यूज इट स्मार्टली. डोंट मेक सिली मिस्टेक्स की भाई पूरा चैट जीपीटी करके और सीवी सीवी पूरा बोल दिया चैट जीपीटी प्लीज मेक माई सीवी, दिस इज द फॉर्मेट. वैसा नहीं करना है, ठीक है. वैसा करोगे तो इट विल हैव प्रॉब्लम्स ना. तुम उस तरह का, चैट जीपीटी काम करता है बट इट्स अगेन अप टू यू टू मेक थिंग्स, ऑल ऑल द पजल्स जो है ना उसको यू हैव टू मेक देम फिट टुगेदर, पीसेस ऑफ द पजल. तो मैनुअली करना अभी तो फिलहाल चैट जीपीटी सब नहीं कर सकता है, तो डोंट यूज इट फॉर दैट. व्हाई, व्हाट डिड यू प्रेफर, पर्सनल एआई? यार देखो, प्रेफरेंस क्या है फॉर मी यूजिंग एआई या फिर मैनुअल या फिर लेट्स से एचआर. यार बॉस, अगर एआई शॉर्टलिस्टिंग यूज करके टाइम बच रहा है तो मैं बचाऊंगा. किसी को ज्यादा काम करने का ऐसा है कि नहीं मैं ज्यादा काम करूंगा, मतलब हो सकता है तुम में से, बट नहीं ना. तो इफिशिएंट क्या है, एंड इफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट. मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं नहीं इफिशिएंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है बॉस. इफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है. वो एचआर को आज प्रोसेस करके वापस कैंपस जाना है क्योंकि कल कहीं और कैंपस जाना है. तो इफिशिएंसी चाहिए ही चाहिए. उनका शेड्यूल मार्क्ड है कि एक महीने में ये 12 बी स्कूल या 15 बी स्कूल से मेरे को 50 कैंडिडेट्स चाहिए या 40 कैंडिडेट्स चाहिए. उनका है उस तरह से उनका शेड्यूल बना हुआ है, तो दे नीड इफिशियंसी. ओके. स्टार फ्रेमवर्क किसी ने बोला यूज करने के लिए, बिल्कुल यू कैन यूज, यू शुड इफ यू कैन. शुड स्टार्ट विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लाइक CFA. नहीं नहीं, यू स्टार्ट विथ एक्शनेबल पावर वर्ब्स which is action verbs. What if you have worked in an industry where performance cannot be quantified? I have not come across such problems in my life. I think you can quantify most things. And industry में ऐसा नहीं है कि you cannot quantify anything. It's you are not able to think. चैट जीपीटी यूज करो, चैट जीपीटी बताएगा. नहीं होगा तो फाइंड अ मेंटर, उसको पूछो, सीनियर्स को पूछो उन्होंने कैसे किया था. some you'll find some really bright people on your campuses. Does these certificates hold value in the CV? यार अगर किसी के पास वर्क एक्स नहीं है, फ्रेशर है, किसी ने इंटर्नशिप भी नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनी है, बहुत से लोग होंगे यहाँ बैठे हुए जिनको मैंने बोला है उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है, तो उनके सीवी में कुछ तो चाहिए ना. तो दे डू सर्टिफिकेशन, है ना. और अगेन ऑप्शन है लाइफ प्रोजेक्ट करने का, लाइफ प्रोजेक्ट करो. डू वी गेट टाइम टू डू लाइफ प्रोजेक्ट्स बिफोर समर इंटर्नशिप्स? यार मुश्किल तो है, इसलिए मैंने बोला था यार तुम्हें. आई थिंक समृद्धि, आई थिंक तुम पार्ट हो गए मेरे सेशंस के जिसमें मैंने बोला है कि प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल विथ माई फोल्डेड हैंड्स कि इंटर्नशिप करो, प्लीज करो. 1 महीने कर लो, 2 महीने कर लो, तुमने नहीं किया. एंड नाउ यू आर सेइंग कि अब तो सर टाइम क्रंच है. या अब सौरभ देयर इज नाउ टाइम क्रंच है. दिक्कत तो होगी, मतलब इसमें देयर इज नो नथिंग कॉल्ड, नथिंग इज गोना बी इजी स्पेशली फॉर यू गाइज इन द फर्स्ट मंथ. ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है. सम ऑफ यू माइट क्राई एज वेल, ठीक है, बट डोंट गिव अप. इतना मैं जरूर बोलूंगा कि यार
यू विल गेट थ्रू, एवरीबडी गेट्स थ्रू इफ यू डोंट गिव अप ना। नहीं होगा नहीं होगा, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, जब तक ऐसा नहीं सोचोगे तब तक हो जाएगा, सब सब निकल जाते हैं। आई डोंट नो, आई डोंट नो इंटर्नशाला हैज लाइफ प्रोजेक्ट्स, इट हैज इन जॉब्स इंटर्नशिप्स, हाँ ठीक है। तो प्रथम लाइफ प्रोजेक्ट्स यार, फिर आई थिंक प्रेबी हैज, एंड प्रेबी मे बी एबल टू प्रोवाइड यू विद अदर सोर्सेज एज वेल। आई थिंक यू शुड आस्क अपूर्व एंड सुमित, connect with those guys. They have much more experience and knowledge in that regard than I. व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन फॉर लाइफ प्रोजेक्ट्स? यार डिपेंड करता है, 2 महीने 3 महीने भी चलते हैं लाइफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, डिपेंड्स कि किस तरह का रिक्वायरमेंट है उस कंपनी का, है ना। सो या सर, हाउ टू मैनेज लाइफ प्रोजेक्ट इंटर्नशिप विद फुल टाइम एमबीए? यार मैनेज तो कल आई थिंक आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट, मैंने बोला यार कि यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, कि लाइफ प्रोजेक्ट में मुझे रोज दिन 2 घंटे देने हैं, केस कॉम्स अगर मैं करूँ तो 2-3 घंटे उधर देने हैं मेरे को। मेरा जो एमबीए करिकुलम है इट्स टेकिंग अबाउट 8 आवर्स, क्लासेस मिला करके 8-9 आवर्स वो ले रहा है, ठीक है। फिर मेरे को सोशल इंगेजमेंट से, या दोस्त बुला रहा है अभी नए नए आए हैं चलो एक्सप्लोर करते हैं, उसमें 3-4 घंटे जाएंगे। फिर मे बी तुम्हारे कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए हैं उसमें 3-4 घंटे जाएंगे। तो यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, है ना, सोना भी है, 5 घंटे या 4 घंटे सोने का ले लो तो वो भी है। तो इट कैन नॉट, उसको और कितना कम करो, कम तो कर दिया, हटा तो सकते नहीं है। तो वी चूज कि क्या कर सकते हो, ठीक है। अगेन जो कुछ लोग अगर केस कॉम्स करना चाह रहे तो आई थिंक भी हैज सम केस कॉम्स के लिए भी फ्री टूल्स भी अवेलेबल है, एंड आई थिंक सम कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल, बट तो यू गाइस कैन आई थिंक चेक विद अगेन विद द एडमिन की क्या है उसकी एक्सेसिबिलिटी एंड रिसोर्सेज। बट अगेन केस कॉम्स आर इम्पॉर्टेंट इफ यू वांट really good opportunities to case comms. For example, I'll take one example, टाटा का इमेजिनेशन चैलेंज होता है, इट्स अ केस कॉम विच गेट्स यू एंट्री इनटू टैस, ठीक है। ऐसे टैस में बहुत लिमिटेड सीट्स होता है, आई थिंक पता नहीं कितने होते हैं, 50-60 होते होंगे। एंड यू नो कि ओल्ड एम्स में जाते हैं वो, ठीक है, एंड वो सब तो काफी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होता है। तो सम ऑफ यू हु आर नॉट गोइंग इन दैट, इन दोज कॉलेजेस ना, तो मे बी दीज आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू गेट दैट कोवेटेड जॉब या रोल या समर प्लेसमेंट, ठीक है, टू हैव दैट एक्सपोजर, टू बी विद सच अ पीयर ग्रुप, तो दैट कॉम्पिटिशंस डेफिनेटली डू, ठीक है। टैस में विजिट हो योर कैंपस एज वेल, बट हाँ उनका वो टाटा इमेजिनेशन से भी होता है। दैट इज समथिंग दैट इज कमिंग टू माई माइंड, बट आई थिंक कोई और भी है विच usually conducts case comms only for that, for their internships. So yeah, should we all connect to each other on LinkedIn? I mean, Ansh, that is up to you. If you want, yeah, you can. uh, yes, that I'll share this, share. Okay, admin, if you want, please share the performer of what I had mentioned. Take it from Ayush. Can you pursue certification courses along with? हाँ, you can pursue certification courses. People are doing. My friend was doing CFA, and people have completed CFA as well. Like, it's hectic. See, it's not easy. As I said, na, ki there are n number of things you can do. You can party also for 4-5 hours. मतलब every day तो कोई नहीं कर पाता है, but ठीक है। तो you have an option to choose कि what you choose. I choose. I chose to interact with you guys during my MBA. So that was my choice, and I prioritize interacting with different people across different social circles. I did not prioritize my academics too much. So मेरे acads low थे. My acads were I think 3.3 something out of 4, which is around 80 something, 83, 84, 82% something like that. So which is not very high. It's not very bad, but it's, I knew कि to get good shortlist I need this much grade is bare minimum. So I tried to meet that. And apart from that, I participated in clubs, committees. I participated in case competitions a lot, ठीक है, because I wanted that exposure. I wanted how to learn how do you make presentations, how do you make a business case. So for that, I did that. So I made a choice, and then I also wanted to interact and connect with you guys, young folks who are coming up. So I used to spend my 4-5, at least 3-4 hours in my MBA with you guys, connecting, solving your queries, answering, helping you guys out. So yeah, it's a choice you make based on your priorities that you want to achieve. Uh, can you repeat the prompt? As I said, PET, personality, environment, and end it with a task. कि क्या करना चाहे, चैट जीपीटी को स्पेसिफिकली बताओ उसको।
नहीं तो वो बोलेगा कहना क्या चाहते हो, ठीक है, आई श्योरली डू इट मेनी टाइम्स एंड चैट वर्क्स बेटर देन गिव्स सो मच बेटर, या ओके, इज एनी वे वी कैन रिव्यू आवर, वी कैन we can review our CV, is there any way, Gunjan is saying we can review our CV, you can review your CV, I think you, yeah, you make a CV and then you review, like I Oh, don't know, I sorry, think you sorry. meant, Is there any way we can get review of our CV? okay, so Uh, you mentioned ki like people from PrepBee help you out, right? People like yeah, me. yeah. Okay. Okay, let's see. We'll figure that out. Okay, I'm working. I'll try and see if we can do something pro bono for you guys. Because again, I said I love connecting with you. Okay. So we may not have too much time on that, but okay, we may figure something out. I'll have to first talk with the admin. Okay, what's their idea? If they have already some plans, if they have already people in place to do that, then probably yeah, they'll help you guys. Okay. Yeah, thank you. Please ask that query to the admin. Okay, Sumit, and I think Apurv is also the right person, or Tanishk, or Ayush. I think if you have access to him, please. Can live projects be done along with internships? हाँ यार, you can do many live projects together as long as your company allows. जो भी company में live projects करोगे ना, some company say कि exclusive, no, you cannot do any other live projects. Some say कि yeah, you can do. Is forest certification useful? Yeah, I mean certification यार. इफ यू कैन टॉक अबाउट इट, कि तुमने ये सीख के ये अप्लाई किया तो फोरेज आई थिंक मेक सेंस, मैंने फोरेज किया है तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा वो एप्लीकेशन सिखाते हैं तुम्हें, वो ऐसा ज्ञानबाजी नहीं देते हैं, मतलब वो तुमको सीखने के लिए दे देंगे, पढ़ो एंड देन ये काम करके एक्सप्लेन। लिस्ट ऑफ पावर्स आई थिंक वो एडमिन के पास होगा, प्लीज आस्क, दे विल डेफिनेटली सेंड इट टू यू गाइस। शुड वी डू लाइव प्रोजेक्ट्स वेयर वी स्टिल टू पे फॉर प्रोजेक्ट? यार पे फॉर प्रोजेक्ट तो मोस्टली नहीं होता है, ठीक है, कहीं पे ऐसा नहीं होता है कि पे करके लाइव प्रोजेक्ट करो, कम जगह होता है। इट्स मे बी इट्स पार्ट ऑफ अ कोर्स कि वो तुमको सिखाएंगे, उसका दे आर चार्जिंग यू, एंड देन देयर इज अ प्रोजेक्ट फॉर यू टू लर्न। बट एज स्टैंड अलोन कोई अगर तुमसे बोल रहा है कि ये प्रोजेक्ट करने दूंगा मैं, ठीक है, पैसे दो, आई डाउट द क्वालिटी ऑफ दैट। ठीक है, प्रोजेक्ट इज सपोज टू हेल्प यू लर्न वॉट एवर, सॉरी, हेल्प यू अप्लाई वॉट एवर यू हैव लर्न। सर हाउ टू मैनेज लाइव प्रोजेक्ट एंड फुल टाइम एमबीए, व्हाट सो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स तो यू विल बी गिवन बाय योर प्रोफेसर्स, ठीक है, उसमें डोंट वरी, यार मैनेज चॉइस, ट्रेड ऑफ्स, है ना, अभी बहुत तुम्हारे लेक्चर्स होंगे ट्रेड ऑफ्स पे, तो ट्रेड ऑफ्स करने पड़ेंगे यार, है ना। मैं पार्टीज में काफी कम जाना स्टार्ट कर दिया था मैं, जब मैंने प्रेबी के साथ एंगेज हुआ था, ठीक है, बिकॉज आई स्टार्टेड लाइकिंग इट, दैट वाज अ ट्रेड ऑफ। बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता था, आई हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोशल सर्कल्स एंड आई विल सजेस्ट दैट यू गाइज ऑल्सो हैव दैट। कनेक्शंस वहीं बनते हैं, एक बार हाय हेलो या लिंक्डइन से सिर्फ कनेक्शन नहीं बनते, एलम्स रिस्पॉन्ड करेंगे थोड़े बहुत, ठीक है, बट सारे नहीं करते हैं और बहुत कोई नहीं करता है। तो वो कनेक्शंस अभी, एक बार बी स्कूल में गए हो, इतने पैसे खर्च कर दिए हैं तो बनाओ, वहाँ पे जाकर के पार्टिसिपेट करो, स्पेंड टाइम विथ डिफरेंट पीयर ग्रुप्स, ठीक है, अपने सीनियर्स में भी बात करना, जूनियर्स में भी करना, ठीक है, अपने पीजीपी वाले से बात करना, स्पेशलाइज प्रोग्राम है, बीए है, उनसे भी जाके बात करना, क्लब्स एंड कमिटीज का पार्ट बनना। फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सर? वैसा कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कुछ नहीं होता है। सब किसी ने लिंक शेयर कर दिया, परफेक्ट यार, मैं भी देख लूंगा, मेरे को भी शेयर कर देना प्लीज। अच्छा, समृद्धि ने शेयर किया है, आई हैव सेंट यू अ डीएम, ओके, कैन यू सजेस्ट सम एटीएस टूल्स प्रेजेंट आर सीवीज बेटर? मैंने बता दिया, चैट जीपीटी का ये यूज़ करो टू इम्प्रूव योर पॉइंटर्स, ठीक है, वैसे ही होता है, बाकी ऐसा कोई अभी तक टूल आई एम नॉट अवेयर। कैन यू सजेस्ट सम मार्केटिंग सर्टिफिकेट्स दैट? मार्केटिंग या सर्टिफिकेट्स का गेम नहीं है, मार्केटिंग इज अबाउट द प्रोजेक्ट, द वर्क दैट यू हैव डन, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट तुमने किया है तो इट सेल्स लाइक दैट। कैन वी हैव एनी स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग पर्सनल ब्रांडिंग? या पर्सनल ब्रांडिंग में मैं बोलूंगा, परफेक्ट, गुड क्वेश्चन, मैंने बोला था सोशल इंजीनियरिंग करो, ठीक है, सबसे बड़ा पर्सनल ब्रांडिंग जो होता है ना आजकल, हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन पर्सनल ब्रांडिंग, तुमको लगा भी होगा अच्छा ऑनलाइन, मैंने लिंक्डइन बोल भी दिया शुरू में, सबसे बेस्ट पर्सनल ब्रांडिंग ये है कि यू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन पीपल अराउंड यू, दैट इज द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू, यू आर अ रिलायबल पर्सन, ठीक है, अलॉन्ग, मैं ये तुम्हारे अपने कोहोर्ट में बोल रहा हूँ। सेकेंड इज जो गेस्ट फैकल्टीज आएंगे उनके लिए तुम, उन पे तुम कैसा इमेज छोड़ रहे हो। आई ट्राई टू डू व्हाट आई कैन
to make sure कि I come across as a genuinely interested candidate. And genuinely I'm saying कि I make sure कि I try and do the pre-reads, especially for, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं उनके pre-reads मत पढ़ो, बट जो बाहर से आते हैं मैं उनके पढ़ने का डेफिनेटली ट्राई करता था, ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स. पीपल हैव गॉटन इंटर्नशिप्स बाय रीचिंग आउट टू देम. एसआईपी थोड़ी टफ जा रही थी, उन्होंने पढ़ाया था, उनको रीच आउट किया कि सर कैन वी, डू यू हैव सम अपॉर्चुनिटीज. एंड ट्रस्ट मी, ऐसे बिग नेम्स बिग फर्म्स में अपॉर्चुनिटीज मिला उन्हें कि आई वॉजेंट इवन अवेयर कि भाई दे आर वर्किंग देयर. तो पर्सनल ब्रांडिंग उस लेवल पे मैं बोलना चाहता हूँ, उस लेवल पे भी करना कि इंगेज करना यार ऑडियंस है. अगर कोई गेस्ट फैकल्टी आता है, कोई सीनियर बंदा आता है, बिकॉज तुम गुड बी स्कूल में जाओगे तो वो बंदे लेके आएंगे, हेड्स लेके आएंगे, बड़े बड़े फर्म्स के ईवाई इस सब के बंदे, पार्टनर्स लेके आएंगे वो, ठीक है. तो वहां पे यू विल हैव टू लीव एन इम्प्रेशन. ऐसा नहीं है कि तुम पूरा क्लास में तुम्हें बात करोगे, बट हाँ क्लास खत्म हो तो हैव अ इंटरेक्शन विद देम कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है. एक्सचेंज ईमेल्स. नंबर हो सकता है नहीं दे, मोस्ट दे देते हैं यार, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो नंबर दे देंगे ना तो हार्डली एक साल में तुम्हारे बैच में से शायद 2 या 3 लोग उनको रीच आउट करेंगे. दिस इज द यूजुअल ट्रेंड. तो वो नंबर भी दे देते हैं कहीं मोस्टली, तो कि रीच आउट टू मी, कार्ड दे देंगे अपना बिजनेस कार्ड की, जस्ट रीच आउट टू मी. एंड कई बार तो तुम्हारे प्रोफेसर जो है ना उनको जाके वापस पूछते भी हैं कि किसी ने रीच आउट किया. सो या, पर्सनल ब्रांडिंग इन दैट सेंस वहां पे भी करना. एंड लिंक्डइन पे मैं बोलूंगा ऑनलाइन की डिफिकल्ट है, बट फ्रीक्वेंटली इन द सेंस कि एक रिदम सेट करो, 2 महीने में या फिर 1 महीने में पोस्ट कम से कम करो, ठीक है. अचीवमेंट्स भी शेयर करो, और कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करो तो उसके बारे में बताओ, ठीक है. सो या, दैट इज समथिंग दैट यू शुड डू. एंड अपना लिंक्डइन अपडेटेड रखो, उसमें कुछ भी चीज ऐसे वैसे नहीं, क्योंकि जब मैं रिक्रूटर की तरह काम कर रहा था आई यूज्ड टू सी लिंक्डइन प्रोफाइल्स. ट्रस्ट मी, मैं जाता था, मैं जज करता था. जज इन द सेंस नॉट इन अ बैड वे, बट मैं गेज करता था कि इसका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनीज किस कंपनीज में काम की है. और लोग ना लिखने में अपने एक्सपीरियंस के नीचे ना उस एक्सपीरियंस में क्या काम किया वो भी लिखते हैं, तो वो भी मैं पढ़ता था. आई फाइंड इट मच मोर हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोफाइल रेलेवेंट है कि नहीं, इंस्टेड ऑफ मी फर्स्ट रीडिंग इंटायर सीवी ये वो. खास करके जिनके पास वर्क एक्स है, क्योंकि अकेड्स लिंक्डइन पे कोई मेंशन नहीं करता है. जिनके पास वर्क एक्स है वो, उसके बारे में वी ट्राई एंड सी कि है नहीं है, कहाँ कंपनी में काम करता है, किस तरह की कंपनी है. तो या, अपडेट करना जरूरी है. The academic achievements that we all can add. Do old achievements are relevant? Old achievements are relevant. 10th का 8th, 10th से पहले का आई डोंट थिंक दे अलाउ, ठीक है. मेरे यहाँ तो शायद नहीं आया करते जहाँ तक आई कैन रिकॉल, कि दे वोंट रिकमेंड एनीथिंग बिलो 10th टू गो ऑन योर सीवी. उसके बाद से तुमने क्या किया है उस पर दिल से. इंटर्नशिप सर्टिफिकेट विल वर्क. इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ पॉइंटर्स का ईमेल वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड, शुयांस, ठीक है. व्हाट आई, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. कोर्सेरा, हबस्पॉट, हाँ हाँ हाँ. ऐड वैल्यू, आई थिंक इट डिपेंड्स. ऐड वैल्यू विल डिपेंड, इट डिपेंड्स कि तुम कैसे कन्विंस कर पा रहे हो, तुमने क्या सीखा. कुछ अगर अप्लाई करके तुमने ट्राई किया उसको, तब तो अच्छा वैल्यू ऐड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट सेशन. इट वाज ओके, वेलकम, एंड इट वाज माय प्लेजर interacting with you, Dashveer. Anuradha, how to build a CV from scratch. About to join a B school and I'm from science background as fresher and now nothing on a CV. And I don't have technical skills to do courses too. हाँ, देखो, अकेड्स सबके होंगे, ठीक है. इंटर्नशिप्स या लाइफ प्रोजेक्ट अगर कर सकते हो तो करो. दैट इज समथिंग दैट एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे पास. साइंस बैकग्राउंड से हो तो आई से कि नॉलेज बिल्डिंग पे काम करना, कि क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ नया होगा, तो मेक श्योर कि तुम बेसिक्स सीखो. स्पेंड टाइम ऑन दैट. प्री रीड्स करना, एकेडमिक्स पे तुम फोकस जरूर करना. मैं बोलूंगा कि इसको हमको थोड़ा सा साइड रखना, क्योंकि अभी तुमको बेसिक्स बिल्ड करना जरूरी है. क्योंकि एमबीए ऐसा है यार कि अगर तुमने बेसिक्स बिल्ड नहीं किए तो, क्योंकि 3 महीने में सेकंड टाइम स्टार्ट हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बिल्ड ऑन फ्रॉम वॉट एवर यू लर्न. मतलब कुछ चीजें हैं जो स्टैंड अलोन होती हैं, बट इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है यार, तो उसके लिए बेसिक्स तो आनी ही चाहिए, ठीक है. इंटरव्यू में वो पूछ सकते हैं कि डिड यू लुक एट आवर लास्ट ईयर्स ग्रोथ. अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है व्हाट वाज आवर सीएजीआर. अब तुमको समझ में नहीं आ रहा कि सीएजीआर क्या होता है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है. कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. तो बेसिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना मैं बोलूंगा.
और लाइफ प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करने का ट्राई करो। एकेडमिक प्रोजेक्ट तुम करोगे वो अपने सीवी में डालना, तुम्हारी सीवी थोड़ी छोटी बनेगी, डरना मत। टेक्निकल स्किल्स तुम्हारा जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केटिंग कर सकते हो तो मार्केटिंग करना, या फिर जो भी करना चाहते हो वो करना, तो इट विल हेल्प यू, ठीक है, ट्रिमेंडसली आई थिंक। और डोंट वरी, अगर फ्रेशर हो, कम स्किल्स है, नई स्ट्रीम से आए हो, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत रखना, सम एलिमेंट्स, तो इट विल वर्क आउट वेल फॉर यू। इफ एनीवन कंपनी इज इन ऑपरेशन एनीमोर, कैन थिंक वेरीफाइड ओवर अदर मीडियम। ये तुम अपने कॉलेज से बात करना कि क्या है एक्चुअली, ठीक है, अपने कॉलेज वालों से। तुम्हारे कॉलेज वाले बताएंगे क्या कर सकते हो तुम। व्हाट इफ द कंपनी डजंट हैव एनी ऑफिशियल डोमेन, यार। मेरे यहाँ पे तो आई थिंक दे वुड आस्क यू टू रिमूव दैट एक्सपीरियंस। अगर डोमेन नहीं है, दे कैनॉट कन्फर्म, तो यू हैव टू रिमूव दैट एक्सपीरियंस। बट या, रिक्वेस्ट करना है यार कि सेंड माय प्रोफाइल या सेंड माय केस टू करियर एडवाइजरी कमेटी, या फिर करियर, जो भी उनका कमेटी होती है जो रिव्यू करती है केस बाय केस बेसिस पे, जाके उनको बताना समझाना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हो सकता है लेटर हेड पे वो बोले कि लेटर हेड पे मतलब लेकर के आओ ये पॉइंटर्स को वेरीफाई करा के, तो मे बी यू कैन डू दैट। हैव हैड 2 जॉब्स, वी नीड वेरीफाई बोथ। यस यस, जो भी डालना चाहते हो सब कुछ वेरिफिकेशन, सब कुछ वेरीफाई होना चाहिए। आई हैव वर्कड 2 बट लेफ्ट माय लास्ट अप्रैल, सो यस। नहीं नहीं, अच्छा तुमने लेफ्ट कर लिया लास्ट ईयर, डू आई स्टिल नीड टू डू इंटर्नशिप्स? और वर्क एक्स वुड बी, सी वर्क एक्स है तो अच्छी बात है, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सम वर्क एथिक। इंटर्नशिप्स मोस्टली क्या होता है कि तुम्हारे जो इंटरेस्ट एरिया होते हैं उससे अलाइंड होते हैं, तो तुम बता सकते हो इंटरव्यू कि मैंने ये चीज़ सीख के अप्लाई किया है, ठीक है। अगर वर्केक्स है तो ठीक है, गुड है, मतलब उसके एक्सपीरियंसेस पे भी तुम बात कर सकते हो। बट वो रेलेवेंट वर्केक्स अगर है तुम्हारा तो काफ़ी अच्छा है, बट नहीं है तो इंटर्नशिप थोड़ा रेलेवेंस होते, बट वर्केक्स इज गुड, ठीक है। एंड कंपनीज वर लुकिंग फॉर, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि वर्केक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस है या फ्रेशर्स को है। कंपनी अपने प्रेफरेंस के साथ आ जाती है, किनको लगता है कि वी वांट बोथ तो दे टेक बोथ, किनको लगता है दे वी वांट फ्रेशर्स तो दे टेक फ्रेशर्स, सम वांट वर्केक्स ओनली तो दे टेक ओनली वर्केक्स। बट इट इज important to have certain criteria type of skills for life projects। हाँ, certain type of skill तो obviously ना that will be marketing में हूँ तो brand management, search engine optimization, ऐसे लाइफ प्रोजेक्ट्स करूंगा ना मैं। अंडरस्टैंड? तो फाइंड कि तुम्हारे इंटरेस्ट एरिया से अलाइन क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उससे करो। डू वी गेट टाइम टू लाइफ प्रोजेक्ट्स बिफोर इंटर? समृद्धि, मैंने आंसर ये कर दिया, कल भी मैंने बताया था, ठीक है। फुल टाइम जॉब चल रहा था, अब फ्री हुए हैं फॉर अ मंथ, ठीक है। अगर अब फ्री हुए तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर नॉलेज बिल्डिंग पे ही काम करना, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता हो, है ना, थोड़ा बहुत उस पर बात करना। लाइव प्रोजेक्ट चेकआउट, ठीक है, प्रबीर ने बता दिया, ग्रेट। फोर्ज रिमोट, ठीक है। देखो सारे सर्टिफिकेशन रिमोट ही होते हैं यार, कोर्सेरा से करो या कहीं से करो। सर व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आर ऑफर्ड इन टीयर 2 टीयर 3 बी स्कूल्स इन फाइनेंस? ऐसा तो यार ये तो काफ़ी जनरल सा क्वेश्चन है यार। फाइनेंस में तो बहुत सारे रोल्स आते हैं यार, एनालिस्ट के रोल्स आते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट कि जैसे तुम काम करोगे कहाँ पे, जीसीसी में काम करोगे या फिर बैकएंड का, मतलब डिपेंड करता है कहाँ पे काम करो, किस तरह का काम करो। क्लाइंट फेसिंग रोल्स जो है वो थोड़ा सा टीयर 1 बी स्कूल्स में ज़्यादा आते हैं, है ना, थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा लेके आते हैं। टीयर 2 में थोड़ा सा हो सकता है सीटीसी कम करते हैं, बट रोल्स तो ठीक ही ठाक आते हैं। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसको ऐसे आंसर करना डिफिकल्ट है, स्पेशली सिंस मैं फाइनेंस, मतलब बीएफएसआई कंपनी में काम करता हूँ, तो इसका आंसर हम कभी अनऑफिशियली या फिर अनऑफिशियल नहीं, मतलब इंटरेक्ट करके वन ऑन वन कर सकते बात है। फॉर मार्केटिंग डोंट सर्टिफिकेट जियो। हाँ यार, सर्टिफिकेशन आ रहा है, ये सब एप्लीकेशन का चीज़ है यार, पलक, है ना। एसईओ सर्टिफिकेशन करना एंड एसईओ करके हैंड्स ऑन ट्राई करना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो ज़्यादा उस पर अगर तुमने लाइव प्रोजेक्ट किया तो ज़्यादा वैल्यू कैरी करता है मेरे हिसाब से, तो मार्केटिंग में खास करके, क्योंकि वो क्रिएटिविटी एंड वो उन सब चीज़ का ज़्यादा वैल्यू होता है वहाँ पे। ऑल्सो आई हैव इंटरेस्टेड इन एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग, एनी जनरल सजेशन हाउ टू मेक अ करियर इन एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग? यार, तो इसके लिए तुमको एक इंटरेस्ट है तो तुम यू शुड बी अवेयर डिफरेंट फॉर्म्स कि क्या क्या तरीके से एडवर्टाइजिंग होता है, गोरिल्ला मार्केटिंग है, पता नहीं क्या क्या होता है आई थिंक। एंड समथिंग मैंने अभी देव सर में मुझे सिखा रहे थे कि यू आर अवेयर कि अभी क्या हो रहा है दुनिया में, एंड देन बेसिस दैट यू मार्केट समथिंग, क्या तो इम्प्रॉम्प्टू मार्केटिंग ऐसे कुछ था।
तो वो सब डिफरेंट टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, फिर ब्रांड कैंपेन्स जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, क्यों सक्सेसफुल रहे हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, तो वो सब थोड़ा क्वालिटेटिव वाइज स्टडी करना अगर इंटरेस्ट है तो मेक श्योर यू डू दैट। ओके, सारा मैंने आंसर कर दिया। किसी ने मेरे को पूछा था, डू 10 फ्रीक्वेंट कंटेंट क्रिएशन अबाउट योर जर्नी लर्निंग्स ऑन लिंक्डइन इंस्टाग्राम हेल्प इन पर्सन। इंस्टाग्राम पे तो नोबडी यार, नोबडी रीचेस यू आउट ऑन इंस्टाग्राम। लिंक्डइन पे हाँ ठीक है, बट ज़्यादा भी मत कर देना। मोमेंट मार्केटिंग किसने लिखा? यस 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 यार, मतलब मैं भी भूल जाता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे नहीं होता है वो सब कंटेंट क्रिएशन। इंस्टाग्राम पे उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए कर रहे हो तो ठीक है, बट वैसे प्रोफेशनली तो लिंक्डइन इज ये। और लिंक्डइन पे भी ज़्यादा ज्ञानबाजी तो मैं पर्सनली, इफ़ यू गो टू माई लिंक्डइन, तो मैं ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं करता। मतलब मैं तो बहुत ही कम करता हूँ यार। पर्सनली आई थिंक आई शुड डू मोर। बट यूजुअली तुम जो प्रोजेक्ट्स पे काम करो ना, और अंडरस्टैंड कि कोई भी तुम्हारा पूरा लंबा पैराग्राफ नहीं पड़ेगा, और चैट जीपीटी तुमने फ्रेम किया तो कोई तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। और तुम्हें भले ही लग जाए कि ये मैं आई एम द मोस्ट स्मार्टेस्ट गाय, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा, चैट जीपीटी पता चल जाता है। ट्रस्ट नहीं, पता चल जाता है। आई टेल यू वन स्टोरी। मैं आई वॉज गोइंग थ्रू लिंक्डइन, मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो आई सॉ पोस्ट, इसमें बता रहे थे कि हाउ रिक्रूटमेंट हैपेंस नाउ डेज, ठीक है। पूरा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ, 3-4 पैराग्राफ के, पूरा 1 पेजर था। आई वाज लाइक अच्छा, किसी ने, आई थिंक दैट पर्सन वाज फ्रॉम वेरी गुड कंपनी, महिंद्रा या समथिंग से थे। एंड देन आई स्क्रॉल दैट सेम एग्जैक्ट मैसेज somebody else had posted. That guy was also working in a very big major firm. I felt like taking a screenshot of both the messages and posting it in their respective comment boxes कि भाई देखो, तुम्हारा तुम्हारा किसी ने शायद चुरा लिया है। हुआ क्या था, वो चैट जीपीटी पे गया, प्रॉम्प्ट दिया, हेल्प मी ड्राफ्ट पोस्ट फॉर लिंक्डइन ऑन दिस थीम। चैट जीपीटी ने मस्त दे दिया। किसी और ने भी सिमिलर प्रॉम्प्ट दिया, उसको भी चैट जीपीटी सेम चीज कॉपी पेस्ट किया। दोनों ने उठाया और दोनों को लगा कि यार दिस इज कंटेंट क्रिएशन, पेस्ट कर दिया। मतलब ऐसा नहीं करो, कोई इतना बड़ा नहीं पड़ता है। तो मेरे हिसाब से यार, मेरे सजेशन लोगे तो थोड़ा सा सक्सेंट रखना कि नॉट मोर देन 5-6 लाइन्स, ठीक है। इट आई नो इट्स डिफिकल्ट, और एक इमेज अटैच करके कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो करो कि वॉट एवर प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, ठीक है। तो दैट इज इट। ज़्यादा बड़े बड़े मत करना। एंड देन ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि यार बहुत बिजी रहते हैं, बट हाँ, ट्राई एंड डू एटलीस्ट कुछ पोस्ट तो करना। मतलब ऐसा नहीं कि लिंक्डइन बना दिया है 4-5 साल से या 2-3 साल से, एंड देन पोस्ट एक भी नहीं है। ऐसा नहीं यार, पोस्ट करो, ठीक है। एंड मेक कनेक्शंस, रीच आउट टू योर एलम्स, उनसे कनेक्ट करो, वो काम आते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? यार बहुत कितने लंबे हमने बातें कर ली यार, 11:40, डैम, काफ़ी लंबा बातचीत हो गया यार। एंड या मैं तो भाई मतलब एनर्जी इतनी आ गई मेरे में कि मैं चुप ही नहीं हुआ। सो शुड वी स्टॉप आर यूट्यूब स्ट्रीम? किसी को कुछ पूछना है, अनम्यूट करके आप कुछ पूछना है तो पूछो गाइस, मैं तब तक देखता हूँ कि मैं, हाँ, ओके, हाउ कैन वी क्लोज द यूट्यूब? अच्छा, यूट्यूब स्ट्रीम शायद बंद हो गया, बट ठीक है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? अ, किसी ने कुछ पूछा है मेन चैट में? थैंक यू फॉर दिस सेशन, यू वेलकम। पोस्टिंग ब्लॉग्स ऑन लिंक्डइन इन ऑर्डर टू मेक पर्सनल ब्रांड। यस यस। तो उसमें कुछ आता है तुम्हारा अचीवमेंट, तुम पोस्ट कर सकते हो कि यू अचीव दिस, यू गॉट अ बेस्ट इंटर्न अवार्ड, या फिर ठीक है, तो वो तुम बता सकते हो। कुछ तुमने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किया यार, कि इनसाइट्स डेवलप किए, तो उसका एक सक्सेंट काफ़ी छोटा, मतलब ऐसा नहीं प्रोजेक्ट नहीं बताना पूरा, बस बताना है कि तुम्हारा क्या लर्निंग्स रहा एंड व्हाट वाज दैट प्रोजेक्ट अबाउट, उस वे में। तो इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड। बट ऑनलाइन वाला बाद में भी कर सकते हो, मतलब करो, ठीक है, बट ऑफलाइन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वुड इम्पैक्ट ऑन योर विजिटिंग फैकल्टीज, तो मस्ट है यार, मतलब बिल्कुल ही। वो तुमने नहीं किया तो यू हैव नॉट डन जस्टिस। एंड कलीग्स, अगेन वो ज़्यादा काम है क्योंकि उनके साथ तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो थोड़ा सा है ना, उन पे भी अच्छा, बी समवन हु दे कैन ट्रस्ट, ठीक है, बी हेल्पफुल। तो
Yeah, I think I have shared as much I had to. जितना मुझे आता था यार मैंने तो बता दिया, और जितने क्वेश्चन थे सॉल्व, आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है. स्टिल इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस तो आप राउट कर सकते हो थ्रू एडमिन्स, या आई मे बी इन सम ऑफ द ग्रुप्स दैट यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ, आई थिंक आई एम, तो ठीक है, आई विल ट्राई एंड सी इफ आई कैन आंसर योर क्वेरीज. एंड यार हैप्पी लर्निंग. आप काफ़ी अच्छे बी स्कूल जा रहे हो, काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके पास, एंड आई होप यू मेक द बेस्ट ऑफ इट. एंड या ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी यार. और तो कुछ बोलना नहीं, आपको कुछ पूछना है तो पूछो. वी कैन क्लोज द सेशन क्योंकि काफ़ी रात ऑलरेडी हो गया, एंड आई हैव केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग. अगर नहीं है तो यू गाइस कैन लीव. ऑल राइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय.